Hey everyone, welcome to the online session of Manu Law Classes. My name is Brijesh, I'm the English faculty at Manu Law Classes. In today's session, we are doing the analysis of question paper of CLAT 2023. Since the answer key is with you, now what is our target here? That we want you to take this paper as an example and prepare for CLAT 2024 accordingly. Alright, so let us see what questions and what nature of questions, how should be your approach and all. Let's discuss. First thing first, the nature of question. So this is about English language section. There were 30 questions and 6 passages. Alright, this is the trend, so they have not changed any trend. Rather, the nature of passages were easy. The length of the passage was also very easily understood. Let's talk about the category. In category, there were, I have already prepared this analysis for you, so I'll be telling you the nature of question and what should be the approach to tackle these kind of questions. Also, how you should plan your further studies. So 18 questions were based upon inference. Total 18 questions were based upon inference. It means what you need to do is practice. Practice is the only thing that you can do to learn how to infer an information when you have given data. Generally, you have a passage. That passage contains a lot of information, data that you have to fetch after reading the question. So reading the question first and then going to the passage is always recommended, because see, when you are reading the question, you know what to fetch from this data, from this information. If you read the passage first, you do not know, you are clueless what they are going to ask, and you have to read from top to bottom and then come to question. Okay, then look for the information that the question is seeking for. And here in this case, if you read the question first, you are aware of what to look for in the passage. That saves time. So saving time is the most important thing that you need to do when you are taking a question paper of be it CLAT or ALET, because you are given 120 minutes, and in this 120 minutes you have to attempt all the 5 sections, which has 150 questions altogether. So total 18 questions were based upon inference, and then you had 11 questions based upon vocab. So what we did in Manu Law classes, we were focused enough for vocabulary. Even question number 4, you will find that in our study material as well. So students were quite happy, sir, I found this question you had already taught. Yeah, that was one number there, and one number makes a difference, right? Even a single number makes a difference. So rest questions were based upon vocabulary. All the vocabulary has been covered in the classroom program and the videos also. The videos that I make every day, every Friday, that has 5 words, so you can also refer to them because they are available on YouTube, and they are highly frequency words that can be helpful for your preparation, because they have been taken from the Hindu newspaper. Alright, so 11 questions were based upon vocab. Only one question was based upon figure of speech, and as always, metaphor. Nothing difficult here, but the nature, I'll show you the question. But nature was quite difficult to understand, right? So we expected so many questions based upon tones. There was no any question based upon tone, and we also expected around 3 to 4 questions based upon figures of speech, but there was only one question based upon figures of speech. Okay, so let us go through the questions that we had. So let's talk about the passage first. The first passage talks about how the people who are far from the mainstream city, they live in village, and how they get related relatedness all about. Okay, so this passage was completely about a person who used to get any reading material very late, because they used to live in far provincial places. So you can see there, here the word provincial refers to the people who are living not in the mainstream city, but they are back village, where things take time to read and get, right? So let's talk about the first question. Question is important. See, in that way you will be able to figure out that what should be your approach for the coming examination. So question says, what
And when you have the word what, it simply means it wants some factual information that is already given in the passage. So what use was the kabadiwala to the author? So when you read the passage, you will easily find that the kabadiwala's stock of books and magazines were of interest to the author. So the author was a keen reader, and not unlike this time, like we have every resources available on internet. That time people used to be dependent upon some magazines book to get information. So by elimination also, you could have done this question. So I would mark it as easy, and this question was based upon slightly inference as well, because though they asked what, but the question was the information was based upon inference, right? So the kabadiwala was about to steal author's magazine? No. Then kabadiwala bought all the magazine for her? No. So the author ordered book online? That is not the case. Only one option which is suitable is B. So that is why I just marked it as easy. Moving on to the next question, that is, what according to the author is essential about the experience of being provincial reader? So how would you rate this kind of question? So provincial, first you need to understand what is the meaning of provincial. Only then you will be able to answer the question. So if I mark this question for you, let me mark it for you, that is medium. Why I have marked it as a medium? Because here the word is important, okay, and also this question is quite tricky. So the correct answer is C, that is accepting a temporal gap between what was current in wider world and the time at which these arrive in a provincial location. So this is important about provincial. This is the meaning of basically provincial. Rest, belatedness in sense of coming late of everything, but not exactly. It's not about everything. It's about the thing that the writer wants. Over-eagerness, no, none of them were no. So only option C was the correct one. So I would mark it as an inference based question again. So practice hard. I would recommend, see, the English paper was quite easy in comparison to other sections, and any person who has been a good reader could have marked at least 25 to 26 questions easily. So that was a good score here. Now let's discuss question number 3, which is, why did the author feel a sense of epiphany and deep sadness? So epiphany का मतलब होता है अचानक से कुछ याद आ जाना, जिससे कि एक यादें ताजा सी हो जाती हैं, that is epiphany, right? So I have first thing, this question is based upon vocab. So here the role of vocab, if you know the epiphany, it was already mentioned in the passage in the line. When you see let's see here, see it says from here, let's say, without our knowledge or cooperation is a moment of epiphany and deep sadness. So it is clearly, this line has clearly been taken from the question paper itself, so it was quite understood. Why did the author feel a sense of epiphany? So question was based upon vocab plus inference, I would say. All right, so the correct answer is because the thing that felt special and unique to the author were already established and accepted by the world, wider world. तो होता क्या है, जो लेखिका है यहाँ पर, उसके पास जो था, कोई भी न्यूज एंड मैगजीन बहुत ही लेट पहुंचता था, तो कोई भी चीज जब आपको नया नया पता चलता है, यू आर एक्साइटेड, ओ व्हाट आई गॉट टू नो, बट उसी समय उसे रियलाइज होता है कि ओके, ये तो सभी लोगों को पहले से ही पता है, मुझे अभी भी पता चला. सो quite a sense of belatedness here you can find. So this is the only information. Rest because the author was less well read, again you can eliminate, because the author was misbeing in city, no. So only option is the correct one. Next, this is the question 4, which you can find in the book, even the MLC kit also. What does the word anachronistic, as in the passage, means? So anachronism means not belonging to the same time, so connected with the other time. Like let's talk about floppy disk. It is not in use right now, right? So that is anachronistic thing. So here connected with the another time. So floppy disk was connected to the last 2 decades when computer was basically in trend. So option C is the correct one. Vocab based question was there, this. So make sure you are working hard enough from today itself about vocab. Okay. Next is, which of the following options captures the meaning of the last sentence best? So this was quite a difficult question, because inference was needed here. The correct answer is B. Though the author feels dated in her access to intellectual ideas, her lack of metropolitan sophistication lets her engage with the ideas with some originality. This is the only thing that you can find from the last line. All right.
Moving on to the next passage, that is about Kiladi. That was a place which was discovered by an archaeologist. So there were so many misconceptions before Kiladi was found. So this is what this whole passage talks about. All right. So first question number 6 here is, what was the assumption about origin of urban life before the Kiladi did? Okay, it was clearly mentioned that the origins lay in the northern Gangetic plains, which urbanized earlier than the south. Okay, quite easy, inference based question was there. Next, the Kiladi excavation further challenged the idea of single fountainhead of the Indian life. So is elaboration of this sentence, which of the following option follows? All right, so see, if I rate this question, it is based upon medium, and there was also medium because you needed clear understanding of the question. Okay, and clear understanding of question can be done only when you are a good reader and you are practicing a lot. So that is why I'm more of rating this paper as a practice based paper, because no grammar is needed here, and vocabulary indeed is needed a lot here. All right, so let's talk about the question. Option number C is the correct one, which says the Kiladi archaeologists proved that Indian urban and modern life emerged independently in several historical periods and geographies, and no one theory is enough to explain it. Right, this is the whole thing that you will find here when you read the passage. Moving on to the next question, that says language. Okay, let's rate the question first. Question is medium nature. The difficulty level of question is medium because of size and because of inference based question. All right, so the correct answer here is C. Ancient urban history of India as we know it today could significantly be altered by the findings of advance achieved by the Kiladi civilization. So question says language including a script similar to Brahmi script. Let's talk about Brahmi script. Emerged in Kiladi in the 6th century BC. Then which of the following is most convincing conclusion? So that is the one which most conclusion is there. Moving on to the next question, this is completely based upon common sense question. If you know and have idea about this BCE, okay, so this is a general knowledge question I would say, because in generally acronym you can find this. Okay, so you need to know what is the correct answer here, A before the common era. Moving on to the next question, that is 10th. It says a farmer could write his own name on a pot he owned. So this is quite challenging question for you when you see it in a way, because this line has been taken from the passage. It simply says that these sentence implies. So this make this question based upon inference. Okay. Now the correct answer is B. Why? The Kiladi civilization did not conserve the access to education and literacy only to the elite. ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था. So a farmer could write his own name on the pot. The fight going on here. You are not the one to teach me to write. I have learned it myself. This sentence implies. Okay. First option says that the Kiladi civilization was an inegalitarian. So देखो, egalitarian का मतलब होता है जिसमें everybody is treated equally. Inegalitarian मतलब भेदभाव कहाँ, जहाँ पे भेदभाव किया जाता है. बट ऐसा नहीं था. अगर आप पैसेज को पढ़ोगे वहाँ पे इवन अ फार्मर कुड राइट है ना, तो इसका मतलब ये था कि egalitarian था, not कि inegalitarian. तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हुआ. रेस्ट दे बोला था that the farmers of the Kiladi civilization were also potters. ऐसा कहा नहीं जा सकता इस सेंटेंस से. सो ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. सो अच्छी बात ये थी कि ज्यादातर क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से किया जा सकता था, है ना, इसीलिए रीडिंग अ क्वेश्चन वंस हेल्प यू, राइट. मूविंग ऑन टू द थर्ड पैसेज, दिस टॉक्स अबाउट how we are connected to internet. Inextricable means it is difficult for a person to avoid it. Question number 11 is, which of the following statement can be inferred from the above passage? All right, so let's rate this question as a medium one, because which of the following means inference based is there, and then this is completely inference based questions. The B option is the correct one, because internet can be used to cause harm also. This is the one that can be inferred from the passage, because see, the internet expanded very slowly, even though the fact is correct, but we need to find whether it is written in the passage or not. The internet is addictive. Yes, it is. In general, it is. But is the passage saying it?
So do not use your own mind but refer to what information has been given in the passage. The main purpose of social media platforms is to dissuade people from showing off. No. So eliminate करके आपके पास option number B बचता है. The internet can be used to call. हाँ, obviously. 12th is again first truism. So what is truism? Means true. All the following sentences are truism except. तो इनमें से ऐसा कौन सा? तो vocab पहले पता होना चाहिए क्योंकि you find this word a little unusual because we know truism very few people may have heard it. All right. So if I rate this question, it is vocab plus inference. So prepare accordingly. The whole reason of making this video is to make you aware of the questions, nature of question for the following here, right? So option number A, B. So it says all the following options are truism. मतलब सारे के सारे सही है, केवल एक को छोड़ के. Okay, कौन सा? A preference for cat video can reveal a lot about your personality. No. Rest, the internet has changed the world, right? Correct. Like any other tool, digital technology has both advantage and disadvantage. Correct. Only time can tell us the future holds. Right. These all information is correct. Only one, that is a cat video कैसे एक person के personality को बता सकते. So that is the common knowledge based question. ठीक है, इसलिए ये भी easy रहा आपके लिए. अच्छा स्कोर किया बच्चों ने. विच ऑफ द फॉलोइंग 13 की बात करते हैं हम सबसे पहले. तो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इसे हम मीडियम का रेटिंग देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स क्लोजर टू द अंडरलाइन सेंटेंस इन द पैसेज. सो यू माइट हैव फाउंड अ सेंटेंस दैट इज underlined in the passage that says the internet has the ability to customize what we can access based upon the our identity, right? So let us go to the underlined line. It says it's as if we have been placed on a lookout that oversees the entire world and given a pair of binoculars that makes everything look like our own reflection. So it is quite understandable here. All right, let's talk about 14. This is the only question that is based upon figure of speech. So FOS stands for figure of speech. I would rate it easy question because you know metaphor, right? And metaphor is luckily metaphor is the favorite figure of speech that CLAT consortium takes always. Every year there is a question based upon metaphor. So metaphor is generally comparing something directly, like you are the lion of the city, means you are like a lion, that goes to simile, and you are the lion. So here it says the village of internet. So ये इंटरनेट का पूरा विलेज बता रहा है, डायरेक्टली विलेज और इंटरनेट को कंपेयर कर दे रहा है बिना किसी एज और लाइक के. देन दिस फिवरिश इलेक्ट्रिकल अनबिलीवेबल हेल के बारे में 3 बातें बताई गई है, डायरेक्ट बोला गया है. सो दिस इज अगेन करेक्ट. 3 रिंग सर्कल्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पॉपुलैरिटी फॉर सक्सेस. दिस इज अगेन कंपेयरिंग directly. So all of the above is the correct answer for the same. Which of the following categories best describe the piece of writing? Easy, I would rate it, and based upon inference. जो भी आपने पढ़ा आप देख सकते हो. academic paper होगा नहीं, fiction होगा नहीं, poem होगा नहीं, non fiction ऐसे ही एक option है जो कि सही है here. So 15, right? So moving on to the next passage that talks about water mafias. जो कि आप अगर पढ़ोगे तो पैसेज के, अगर मैं पैसेज को रेटिंग करूँ इसके तो इजी बोलूँगा क्योंकि पूरा लैंग्वेज समझ आता है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है इसमें, कोई ऐसा डिफिकल्ट वोकैब भी नहीं रखा गया है जिससे कि पैसेज को डिफिकल्ट बनाया जाए. सो क्वाइट इजी paper was there in terms of English. Other section में the passages were lengthy, but here in English section it was quite easy to make a balance basically. ठीक है, 16 के बारे में बात करते हैं. This is again inference based question. Which of the following can be inferred from the passage? So the water supplied by the water tank mafia potentially contaminated. देखो inference निकालना है, elimination technique का यूज करते हैं. पहले बोल रहा है the water tank mafia operation through illegal are justified. Anything that is illegal are not justified. फर्स्ट थिंग, तो ये एलिमिनेट हो जाता है. फिर बोल रहा है प्राइवेट ट्रक ओनर्स प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. क्या यही बात इन्फर कर सकते हैं? पैसेज से इन्फर करने का मतलब क्या होता है कि जो मोस्ट क्लोज होता है, तो आपके पास ऑप्शन बी ही है जो दैट इज क्लोज्ड वन. नेक्स्ट इज द वाटर सप्लाइड बाय द वाटर टैंक माफिया इज मेंट प्राइमरली फॉर रेसिडेंशियल यूज. ऐसा कुछ हमें पैसेज में नहीं मिलता, वो कहीं भी यूज कर सकते हैं. तो बी इज द करेक्ट वन. एलिमिनेशन से आपने कर लिया इसे. आगे बढ़ते. विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन द पैसेज सजेस्ट दैट द इलीगल सप्लाई ऑफ ग्राउंड वाटर इज नॉट अ रिसेंट फिनोमेना. देखो दिस इज अगेन वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, तो इसे रेट करेंगे मीडियम टू डिफिकल्ट. अगर किसी बच्चे को इसकी मीनिंग नहीं पता है ना तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अदर 3 तो आसान था. तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन अ पैसेज. सो सारे ही यूज हुए हैं. सजेस्ट दैट इलीगल सप्लाई ऑफ ग्राउंड वाटर इज नॉट अ रिसेंट फिनोमेना. मतलब जो वाटर की इलीगल सप्लाई हो रही है रिसेंट नहीं है, ये लंबे समय से चली आ रही है. तो ऐसा क्या है
जो लंबे समय से है, एंट्रेंच्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यूबिक्विटस मतलब जो कि प्रेजेंट एवरीवेयर है, हर जगह पे प्रेजेंट है, आप इसे ओमनी प्रेजेंट भी बोल सकते हो। So that is not the correct option. Entrenched है मतलब बना हुआ है, लंबे समय से बना हुआ है. This is not a recent phenomena. All right. Then 18th, which of the following? First rate this question as an this is inference based question, so I would rate it as a medium. Most of the questions were a medium in nature. Which of the following seems to be author's main concern in the passage? So author का concern क्या था पूरे passage में, ये आपको बताना है. So देखो, the petty profiteering of a few actors come at the immense cost of India's sustainable access to water. थोड़े लोगों के फायदे से बड़े लोगों का नुकसान हो रहा है, ये मेन ही कंसर्न था, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना, पिटी प्रॉफिट हो रहा है एक्टर्स को, जिसमें जो एक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, ठीक है, जो कि हमें इमेंस बहुत ज़्यादा बड़ी महंगा पड़ेगा इंडिया को, बात करें इस बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं 19 को देखते हैं। अगेन वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है, बोल रहा है। और ये देखो बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इसका कोई लिटरेचर से संबंध नहीं है, ध्यान से देखा जाए तो, जो आपके पास ऑप्शन पैराग्राफ दिया हुआ बोल रहे हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साउंड्स यू कैन हियर एज द वाटर टैंकर्स आर फिल्ड एक्सेप्ट, इनमें से 3 ऐसा है जो कि जब वाटर टैंकर फिल होगा तो कैसा साउंड करेगा, क्रीकिंग ऑब्वियसली, थ्रॉमिंग ऑब्वियसली, ड्रोविंग, सारे ही पानी की जब हलचल होती है उस सेंस में ये आवाज आते हैं, ठीक है। पर गशिंग जो है वो बहते हुए पानी के सेंस में है, तो अगर कोई पानी बह रहा है जैसे कि नदियों का कलकल सा करना, दैट इज कॉल्ड गशिंग, पर यहाँ पे ये पानी भरते समय वाटर के टैंक में ऐसी आवाज का आना संभव नहीं है। सो दिस इज अगेन आप कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। सो अगर आप देख लो बीसीई वाले क्वेश्चन को देख लो, वो भी जीके बेस्ड क्वेश्चन था जिसका टेक्स्ट से कोई संबंध नहीं था, आपको पता होना चाहिए था मीनिंग उसका। हियर अगेन मीनिंग बेस्ड, सो दैट इज व्हाई वोकैबुलरी एंड रीडिंग स्पीड, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू वर्क अपॉन थ्रू आउट द क्लैट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन हिडन, अब देखो हिडन का मीनिंग बताना है आपको, इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, जो कि रिलेटेड नहीं है, तो मीडियम रेट करते हैं क्योंकि पता होना चाहिए, ठीक है। देन आपका आता है आइडलिंग, सिटिंग आइडल मतलब कुछ नहीं करना। सबवर्सिव, सबवर्सिव मीन्स आपका किसी भी तरह से जो डिस्ट्रप्शन पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है किसी भी चीज में। कोवर्ट, कोवर्ट का मतलब होता है सीक्रेट, so this is the only option, that secret is a hidden thing, so covert is the only option, so again it is based upon vocab. Next, अब देखो इंग्लिश के बारे में बात कर रहा है, दिस इज काइंड ऑफ आयरनी आई वुड फाइंड हियर। एक तो क्लैट जो है कंप्लीटली इंग्लिश बेस्ड पेपर है जिसमें इंग्लिश का स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ऑन दी अदर हैंड इंग्लिश के पैसेज के बारे में बात कर रहा है, इसमें चेतन भगत के बारे में बात किया गया है, जिसमें कि उन्होंने सोसाइटी को E1 एंड E2 दो क्लास में डिवाइड कर रखा है, अगर आप पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी था, सो आई वुड रेट मीडियम, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन था, कॉमन सेंस की भी जरूरत पड़नी थी। बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ऑथर्स व्यू ऑन इंग्लिश इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, तो कंटेम्प्रेरी इंडिया में कौन सा है जो राइटर के व्यू को बोल रहा है। द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश इन इंडिया डिपेंड्स ऑन प्लेस एंड आइडेंटिटी, तो अगर आप देखो ध्यान से तो सच बात है, अगर कोई बच्चा जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में है, अच्छे स्कूल में गया हुआ है, उसकी इंग्लिश अच्छी होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई विलेज में है जहाँ पर रिसोर्सेज कम है, उसकी इंग्लिश वीक होगी। सो ये डिपेंड करता है कि कहाँ से कोई प्लेस है, क्या उसकी सोशल आइडेंटिटी है, उससे पता चलता है कि कोई बच्चा इंग्लिश कैसे बोलता है। ये इवन के एग्जाम्पल में भी दे रखा है कि कोई दो समान पोटेंशियल के व्यक्ति जो कि दो डिफरेंट प्लेसेस एंड सोशल आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप उनमें इंग्लिश में डिबेट कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है, इवन दो उसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है एंड क्वालिटी है, प्रतिभा है, पर फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा क्योंकि उसकी ऐसी परवरिश नहीं हुई है, ऐसे उसे ज्ञान नहीं मिला हुआ है इंग्लिश स्कूल का, है ना। फिर बोल रहे हैं इंग्लिश इज नॉट एन इंडियन नेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश नॉट एन इंडियन लैंग्वेज, तो ये तो फैक्ट है, पर पैसेज के ऑथर के व्यू में ये नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंसी डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई कॉम्पिटेंस, ये बात कह सकते हैं, बट फिर भी ये इन्फर नहीं किया जा सकता, ठीक है। कॉम्पिटेंसी का नहीं पता चलता, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। ऑन दी अदर हैंड आई वुड से वाइस वर्सा, कि कोई अच्छा इंग्लिश बोल रहा है और वो ये भी नहीं मान सकते कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, ठीक है। पीपल्स व्यू ऑन इंग्लिश आर डिवाइडेड अलॉन्ग पॉलिटिकल लाइन्स, ऐसा कुछ नहीं, सो ओनली वन ऑप्शन दैट इज ए इज द करेक्ट वन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अभी देखो ये भी दूसरा वाला भी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, और
जनरली 1 और 2 दोनों में ही ऐसा लग रहा था कि सही है, तो ज़्यादातर लोगों ने सी मार्क करके आए हैं, क्योंकि वो ड्यू टू द प्रेशर ऑफ टाइम वहाँ पे मेन चीज़ नहीं समझ पाए। बोल रहे हु अमंग दी फॉलोइंग वुड डिफाई, तो सबसे पहले आपको डिफाई का मीनिंग पता होना चाहिए, तो ये वो कैप को भी रेफर करता है, प्लस इन्फरेंस भी इसमें आपको मिलता है। क्वेश्चन को रेट करें तो मीडियम माना जाएगा। बोले नीट कैटेगराइजेशन, एकदम क्लियर कैटेगराइजेशन दे रहा है ऑफ इंडियन इंग्लिश स्पीकर इनटू E1 एंड E2। दो ऑप्शन दिया गया, एक सविता नाम की लड़की है जो कि एन एवब एवरेज है, एवब एवरेज का मतलब पढ़ने में ठीक स्टूडेंट है, एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल मुंबई की है, बिलोंग्स टू एन अपर मिडिल क्लास, पब्लिक स्पीकिंग मेक्स हर एक्सट्रीमली नर्वस, पब्लिक स्पीकिंग जो है उसे एक्सट्रीमली नर्वस बना देती है, ठीक है, एंड शी फंबल्स थ्रू ऑल हर इंटरव्यूज। मोइन जो है दूसरा बंदा है जो कि बोल रहा है वंस अ मिल्कमैन, जो कि रांची में मिल्कमैन हुआ करता था, उसने इंग्लिश को सीखा 17 की एज में, उसके बाद उसने काफ़ी मेहनत किया और वो बहुत ही अच्छा स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर बना, टीचर बना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसा लगेगा दोनों ही तो सही बात है, दोनों ही डिफाई कर सकते हैं, क्योंकि E1 कैटेगरी के वो लोग थे जो इंग्लिश बोलने में उन्हें दिक्कत नहीं होती थी, और E2 वाले जो थे उन्हें दिक्कत होती थी। तो ये जो E2 से बिलोंग करता है ये E1 से बिलोंग करता है। बट द ट्रिक हियर इज, यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग की बात करी गई है, ना कि इंग्लिश स्पीकिंग की बात करी गई है। एक तरफ बोल रहा है कि वो एवरेज स्टूडेंट थी, है ना, मुंबई जैसे शहर के अपर मिडिल क्लास में, तो यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन ठीक है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग के लिए तो कोई भी हो, E1 भी होता है, उसकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। पब्लिक स्पीकिंग इज द सेकेंड मोस्ट डेंजरस फियर पीपल फाइंड इट, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हुआ था, क्योंकि मोइन जो है वो डिफाई कर सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि E2 वाले इंग्लिश नहीं बोल सकते, जो कि वो गांव में बिलोंग करता है, गांव से है, कम उम्र का, उसने मेहनत किया और अच्छा इंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23 पे। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ऑथर रिस्पॉन्स टू भगत व्यू ऑन इंग्लिश। तो भगत के ही व्यू पूरे के पूरे हैं, महात्मा गांधी जी का एक जगह व्यू है, जिसमें कि इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन अगर मैं इसे रेट करूँ फिर ये भी मीडियम में जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट बताया गया, क्या द ऑथर डिसमिसेस हिज व्यू, पूरी तरह से डिसमिस नहीं करा है, द ऑथर कंप्लीटली अग्री भी नहीं करा है। तो अगर पूरी तरह से डिसअग्री नहीं किया है और अग्री भी नहीं किया है, फिर क्या बोला, द ऑथर अग्रीज नॉट नीदर डिसअग्रीज, ऐसा भी नहीं कह सकते। लास्ट ऑप्शन है द ऑथर कंसीडर्स हिज व्यू एंड फाइंड्स दैट लैक नुआंसेस, थोड़ी थोड़ी सी कमी ऐसा बताया गया। सो दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। 24 पे आते हैं, दैट इज अगेन इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन व्हिच सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम गांधीज व्यू विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है, इन आजादी के बाद के बारे में बात कर रहा है। तो बोल रहा है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज in order to gain entry into bureaucracy, तो ये सच है, इंग्लिश शुड नॉट बी टॉट इन, ऐसा कुछ नहीं था, एलिमिनेट करो, इंडियन वुमेन कैन नॉट गेट रिच, ओके, ये भी गलत था। तो इजी किया जा सकता है, कभी कभी देखो व्हेन यू आर स्टक विद एनी क्वेश्चन ट्राई एलिमिनेटिंग इट, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन अगर देखा जाए तो आउट ऑफ ऑर्डर है, आउट ऑफ टॉपिक है, आई वुड से। ऑप्शन बी जो बचता है वही ऑप्शन है जो कि सही है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में बोल रहा है कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो आपको ब्यूरोक्रेसी में आंसर नहीं मिलता है, एडमिशन नहीं मिलता। फिर बात कर रहे हैं ऑल द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड और सिनोनिम। तो देखो ये भी वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है सिनोनिम पे, जिसमें बोला एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब कौन सा इनमें से नहीं है, तो स्टार्क एंड स्टार्क बोथ आर सिनोनिम, क्रूसेड एंड कैंपेन बोथ आर सिनोनिम, कोहेशन एंड यूनिटी बोथ आर सिनोनिम। एक ऑप्शन बचा सोफिस्टिकेटेड एंड स्पॉइल्ड। देखो स्पॉइल्ड मतलब जो बिगड़ा हुआ व्यक्ति है, सोफिस्टिकेटेड मतलब कोई चीज जो बहुत ही प्लान्ड है, प्लान के साथ किया जाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट हारून का पैसेज है जिसमें कि वो मानने ना मानने के बारे में बात कर रहा है, बड़ी वेरी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पैसेज, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें एक प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम इफ है, ठीक है, हारून है आपके सामने। तो बोल रहा है इफ तो इफ जो है आपका कंडीशनल प्लस नेम इज राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अगेन इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो नेमिंग समथिंग इज वन वे टू मेक इट रियल, बोल रहा है कि भले ही हमारे सामने कुछ नहीं है लेकिन हमने नेम अगर कर दिया तो वो रियल है, दिस इज द पैसेज टॉकिंग अबाउट कि मान लो, मानने से रिलेटेड है। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अगर आप देखो लेंथ ऑफ द क्वेश्चन वेरी स्मॉल, तो छोटा ही है, पर फिर भी प्रॉब्लम करा कई लोगों को, इजी रेट दूंगा इस क्वेश्चन को मैं, ठीक है। बोल रहा है ही हैज अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन सिनोनिम्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू इफ, he is in contradiction, no, he uses proverb to explain, no, metaphors, no, so synonym ही यूज कर रहा था वो किसी भी चीज के लिए, so that is why that is the correct option। फिर बोल रहे हैं 28 में आते हैं, it says which of the following most accurately describes what the underlying sentence means in the context of passage। तो पहली बात तो inference based है, ठीक है।
फिर बोला डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर नॉलेज ओनली व्हाट यू कैन सी फिजिकली। अगर हम पैसेज की बात करें, अपनी अपनी कॉमन सेंस की बात ना करके अगर हम पैसेज की बात करें, उसमें बोल रहे हैं कि अपने आप अपनी नॉलेज को केवल वहीं तक मत सीमित रखो जो आप देख सकते हो, आप उन चीज़ों को भी देखो जो आप नहीं देख सकते हो, मन की आंखों से देख सकते हो। तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आपका आता है 29, दैट इज vocab बेस्ड। All the word below are related to meaning except, ठीक है। levitate, fly and hover, all of them are synonym। सबका मतलब होता है मंडराना, उड़ना या उड़ना ही सारे के सारे, ठीक है। hover। फिर गैंडर जो वर्ड है दैट इज द मेल वर्जन ऑफ गूज। गूज जो होते एक एनिमल होते हैं, पंछी होती है, उसके मेल वर्जन को गैंडर बोलते हैं, ठीक है। तो इस पैसेज से रिलेटेड यही वर्ड नहीं है, बाकी सारे के सारे। फिर बोला व्हाट डज फैबुलस मीन इन दी पैसेज। देखो, इसीलिए वोकैब को कॉन्टेक्चुअली समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फैबुलस तो एक ऐसा वर्ड है जो हर कोई जानता है। लाइक एवरी टाइम यू वॉच एनी रियलिटी शोज, वहाँ पे जजेस बोलते हैं फैबुलस, फैंटास्टिक। तो जनरली स्टूडेंट्स को लगा कि ये अनबिलीवेबल होगा, क्योंकि फैबुलस का वही मतलब होता है, या इनॉर्मस भी लगा सकते थे कि वो, या वेरी गुड भी बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको फैबुलस का कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। हमेशा कॉन्टेक्स्ट को देखना होता है। बोल रहा है कि and as well as birds there were fabulous winged creature out of the legend। तो यहाँ पे फैबुलस को एज एन एडजेक्टिव यूज किया हुआ है, जिसे मिथिकल वे में बोला गया। सो दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट सूट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज, बट अनबिलीवेबल जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये सही है, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आपने इस पेपर को देख के आई होप आपने पूरा प्लान कर लिया होगा कि अब मुझे क्या करना है 2024 के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आगे के पैसेजेस बहुत ही एक स्ट्रीमलाइन होना अपने प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट एवर वी हैव डन टुडे। हमने देखा कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में 30 क्वेश्चन थे, 6 पैसेज थे, जो कि एक कॉमन सा ट्रेंड है। ये आप 25 मिनट में करके अपना समय भी बचा सकते थे, तो ये इजी पैसेज था। 5 मिनट वॉज सफिशियंट टू सॉल्व अ पैसेज। इसमें आप अगर अपने 3 मिनट भी पैसेज को दिया हो और 2 मिनट में क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लो, दैट वॉज क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। जिनमें 18 क्वेश्चन थे इन्फ्रेंस बेस्ड और एक 11 क्वेश्चन वोकैब बेस्ड एंड एक ग्रामर है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामर नहीं पढ़ना, नेक्स्ट टाइम मे बी ट्रेंड कैन बी एनीथिंग, क्योंकि पिछले साल अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस टाइम अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। सो ग्रामर ऑलवेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आवर प्रिपरेशन। सो let us finish this session for English. Keep watching for the other sections also. Thank you so much.